So we're at this problem 108 of Leetcode where we're given in fact an array and we have to convert it into a BST. So what is this term BST? This is nothing but binary search tree. Okay, ठीक है binary search tree, but binary search tree की मतलब क्या? Property क्या? इसका left child, like just take a node. Okay, the left child of this node is going to be a smaller value, like smaller than 0. Let's suppose -3. The right child is going to be a greater value than 0. Let's suppose 5. Is this a valid BST? Yes, this is a valid BST. So now the problem says, okay, so you're given a vector. Let's suppose the vector is -10, 3, 0, 5, 5 and 7. Now you have to create binary search tree out of this. If you know binary search tree and its properties, you have 3 types of traversals for binary trees or trees in general. Out of those 3 traversals, in order traversal of BST, this is a property of BST, it is always sorted. This is also sorted. Is it an in-order traversal of a BST? Yes, this is an in-order traversal of a BST. So can we make BST out of its in-order traversal? Yeah, probably we can. Like how? Like can we write a simple function where we're going to pass the root or say the parent, and further we're just going to set, like for example parent in this case would be 0. Like let's suppose, how are you going to know that the parent is 0? As you can see, like from the left it's all smaller than 0, to the right it's all greater than 0. Like 0 is something which comes in the middle. It's like fine. So 0 is something that comes in the middle. Okay, so the left subtree would include -10 and -3. I don't know the positions, but I definitely know that -10 and -3 will be in the left part, the left subtree. And 5 and 7 will be right subtree. Yeah, then after this, what we know, like there is some value and there is smaller value than to this, or we can say there is some value, we have a bigger value to this. Like either way is possible. Now if we try to solve it, it could either look like -3 and -10, or it can look like, or it can look like -10 into the right, -3. Same possible ways, like there are 2 possible ways here also. Like what do we have to do? We have to identify the mid. Okay, to be very precise, the parent node. And how are we going to identify what is the parent node? So this was our example. We know that the mid of the array is going to be the parent. Anyhow, what are we just passing? Well, we are going to make a function in which we're just passing the array. Okay, the left pointer and the right pointer. Fine. Then after we'll calculate the mid by this formula. Like mid is equals to L plus R minus L by 2. This is going to be our the formula for creating mid. Alright, in this case L is 0 and R is 1, 2, 3, 4, 5. It is going to be 4. Right. So 4 plus 0 plus 4 minus 0 by 2, it is going to be 2. So 0, 1, 2, 0. Now it is going to be a root node. 0 root node हो जाएगा, and from like 0 to 2 minute थोड़ा clear कर देता है. Now what we'll do is, ठीक है, एक function call करेंगे for this -10, -3, 0, 5 and 7 के लिए. फिर यहाँ से क्या होगा, हमारा रूट नोड जनरेट करेंगे और रूट के राइट के लिए, यानी कि रूट के राइट के लिए हम फिर से फंक्शन कॉल जनरेट कर देंगे. और फंक्शन कॉल कैसे रहेगी,
5 और 7। ठीक है, फिर रूट के लेफ्ट के लिए हम एक कॉल जनरेट कर देंगे -10 -3, जैसे मैंने ट्राई रन करके बताया था। ठीक है, सिंपल हो गया ये तो, या तो सिंपल हो गया या तो इसको थोड़ा अभी, ये तो नहीं हुआ सिंपल, मुझे लगता है मेरे को कुछ ढंग से समझा पाया मैं। हम ठीक है, ये हमारा कुछ फंक्शन है। हम क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट किया, मिड को हमने रूट बना दिया, फिर एंड बना दिया। हम क्या करेंगे, एक और कॉल मारेंगे। अब हम नम्स को, यानी कि हमारे इनपुट को रिड्यूस करेंगे। इन रिकर्जन हम क्या करते हैं, हम इनपुट को रिड्यूस करते हैं। हम इस इनपुट को रिड्यूस करते हैं एंड इस पर क्या करेंगे, इस पर फिर से मिड निकालेंगे, बट वो रूट का लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पर फिर से मिड निकाला, सपोज -3। ठीक है, अब -3 एंड -10 विल एडजस्ट, एंड 5 and 7। आई नो रिकर्जन इज अ लिटिल डिफिकल्ट। तो ये कैसे चल रहा है, तो थोड़ा ये रिकर्जन आना चाहिए, तो वैसे चलेगा। तो रिकर्जन का एक बार कोड हम देख लेते हैं कि कोड कैसा दिखेगा। सो कोड विल लुक लाइक, हम क्या करेंगे, एक ट्री नोड, मतलब एक पॉइंटर रिटर्न करने वाला एक हेल्पर फंक्शन बना लेंगे, जहाँ पे हम एक क्या बोलते हैं, हम अपना रूट नोड पास करेंगे। नहीं, हम अपना रूट नोड पास नहीं करेंगे, हम इनिशियली क्या पास करेंगे, लेफ्ट, एंड हम इनिशियली पास करेंगे राइट, जैसे कि मैंने बताया था। वी हैव वेक्टर int and we'll pass it by reference, passing it by reference just because कि बार बार उसकी कॉपी क्रिएट ना हो। ऑलराइट, ओहो मेरा कीबोर्ड की तरह चला गया। ठीक है, लाइक अगर इफ देयर इज अ कंडीशन, अगर l हमारा r से बड़ा हो जाए तो मतलब इनवैलिड है ना, तो डेफिनेटली विल रिटर्न null pointer। फाइन, अब हमारा सब वैलिड है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मिड कैलकुलेशन करेंगे। मिड इज गोइंग टू बी, एज आई सेड, l plus r minus l divided by 2. Like fine, now I'm creating a actual memory, we're just assigning memory. I was saying tree node star node equals to new tree node and new tree node, और उसमें हम वैल्यू क्या पास कर देंगे, nums at mid। फाइन, ऑलराइट, हम क्या करेंगे, रूट के लेफ्ट को कैसे असाइन करेंगे, रूट लेफ्ट इज इक्वल्स टू हेल्पर ऑफ, अब l तो वही रहेगा क्योंकि रूट का वो है लेफ्ट, मिड -1 हो जाएगा यहाँ पे, नम्स भी वही रहेगा। फाइन, ऐसे ही हम रूट के राइट के लिए भी कॉल लगा देंगे। ठीक है, कि यहाँ पे l अपडेट होगा विच इज मिड +1 एंड r विल रिमेन द सेम एंड नम्स। ठीक है, फाइनल हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे ना मैंने नोड लिखा है एंड इधर मैंने रूट लिख दिया, दैट विल बी अ मिस्टेक। आई एम जस्ट सिंपली रिटर्निंग द नोड। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा नोड हो जाएगा, यहाँ पे नोड हो जाएगा, just simply returning the node. So this is some function which you have to explicitly make just to, ठीक है, अभी solution है, क्या है, pure recursion. So you should know how recursion works before jumping onto the solution.